में हमारे व्यूअर्स ने हमको ट्रैफिक लाइट का डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस पूरी जो ट्रैफिक लाइट एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में डिटेल दे देती हूँ। ट्रैफिक लाइट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन एक ही रिएक्शन में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इंडिगो कार्माइन का होता है, विच इज अ डाई विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, सो इंडिगो कार्माइन वैसे तो ब्लू कलर रहती है, बट जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, व्हेन इट मिक्सेस विद द ऑक्सीजन, इट बिकम्स ग्रीन इन कलर इन द सॉल्यूशन, एंड आफ्टर दैट स्लोली दैट ग्रीन कलर रिड्यूसेस टू रेड। ठीक है, तो आपका जो डेक्सट्रोज है, अल्कलाइन डेक्सट्रोज है, वो इंडिगो कार्माइन को रिड्यूस करता है पहले रेड कलर में और फिर इसको रिड्यूस करता है येलो कलर में। सो ये ओवरऑल रिएक्शन जो है ये है अपना रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक लाइट, क्योंकि ट्रैफिक लाइट में 3 कलर होते हैं, ग्रीन, रेड एंड येलो, और ये इसी सीक्वेंस में ग्रीन, रेड और येलो 3 कलर्स दिखाता है। दैट इज द रीजन द नेम ऑफ द रिएक्शन इज ट्रैफिक लाइट। इसके लिए क्या क्या लगने वाला है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए लगने वाला है ग्लूकोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लगने वाला है इंडिगो कार्बाइन। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सबसे पहले हमें लेना है 25 ml ऑफ वाटर, only a pinch of indigo carmine, 25 ml of water। तो अब हमें एक दूसरा बीकर लेना है जिसमें हम लोग ने 150 ml वाटर लिया है। इसमें हमको डिसॉल्व करना है 3 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, अब हम इसमें डालेंगे, जैसे ही ग्लूकोज पूरी तरह से डिसॉल्व होता है, वी विल ऐड 5 ग्राम्स ऑफ sodium hydroxide pellets. This you have to add carefully, and that too immediately, because sodium hydroxide pellet जो है वो moisture catch कर लेते हैं, तो आपको इसको ज़्यादा देर ऊपर नहीं रखना है and immediately add करना है। Now what we are doing, we are preparing alkaline solution of dextrose. What we are doing? Alkaline solution of dextrose we are preparing, and as I am preparing, the solution is getting slightly warmer. This is because it is an exothermic reaction. It releases heat while it is dissolving. So this is an example of exothermic reaction. Now we will add a little bit of indigo carmine into the flask, and to this we will add our another solution, that is alkaline solution of dextrose, and we will see the color change. So as we add this, the solution becomes
share which particular experiment you would like to see in the next video, and like, subscribe and share with your friends. Thank you so much.